डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 हाइपरबोला. The standard equation of hyperbola are: first is x square by a square minus y square by b square is equal to 1, और second है y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Now, first standard form, that is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. The diagram of this hyperbola is given as: transverse axis is x axis, conjugate axis is y axis. So, and focus is f1 c comma 0, f2 minus c comma 0, and c is equal to root under a square plus b square. और फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और उसके फार्मूला. फर्स्ट है हमारा वर्टेक्स ए माइनस ए कॉमा 0 एंड वर्टेक्स बी ए कॉमा 0. नेक्स्ट है फोकस f1 c कॉमा 0, f2 minus c comma 0. Transverse axis, x axis, conjugate axis, y axis, and length of transverse axis is formula is 2a, length of conjugate axis is equal to formula is 2b, and length of lattice rectum is equal to 2b square by a. Second standard form of hyperbola is y square by a square minus x square by b square is equal to 1, और c बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा, और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होगा. ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेरिएबल पहले होगा वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और जो वेरिएबल हमारा सेकेंड पोजीशन पे होगा वो हमारे लिए कॉन्जुगेट एक्सिस का रोल प्ले करेगा. जैसे सेकेंड फॉर्म में हमारे पास y पहले है, सो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा y होगा, और x बाद में है, सो हमारे लिए कॉन्जुगेट जो है वो x एक्सिस होगा. नेक्स्ट वर्टेक्स A is 0 comma a and vertex B is 0 comma minus a. ट्रांसवर्स एक्सिस चूँकि y एक्सिस है तो वर्टेक्स और फोकाई वो दोनों भी y एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेंगे. सो फर्स्ट फोकस जो कि 0 comma c, सेकेंड फोकस
0 comma minus c. Next is length of lattice rectum. Formula है 2a. Length of conjugate axis for formula is 2b. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि 2b² बाई ए. नेक्स्ट एसेंट्रिसिटी जिसे हम ई से डिनोट करते हैं विच इज डिफाइंड एज c बाई ए. Example 1. Find the coordinate of the foci and vertex, eccentricity, the length of lattice rectum of hyperbola. Hyperbola is x square by 9 minus y square by 16 is equal to 1. Solution. Comparing the equation with x square by a square minus y square by b square is equal to 1. We get a square is 9 and b square is 16. And formula of c is root over a square plus b square. So a square is 9 or b square is 16. So c is 9 plus 16. So after simplify we get c is 5. Now the coordinate of foci, so f1 is 5 comma 0 and f2 is minus 5 comma 0. Since f1 is c comma 0 and f2 is minus c comma 0. Since it is a first standard form of hyperbola जिसमें हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस होगा. नेक्स्ट इज वर्टेक्स. सो वर्टेक्स ए इज a comma 0 और b इज माइनस a comma 0. चूँकि ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होगा जिसके कारण फोकाई और वर्टेक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेंगे. सो vertex first is 3 comma 0 and second vertex minus 3 comma 0. Next is length of transverse axis which is 2a, so 2 into 3 which is 6. Length of conjugate axis which is 2b, 2 into 4 which is 8. Next is length of lattice rectum. Formula is 2b square by a. 2 into b square is 16. So we compute 2 into 16 by 3 which is 32 by 3. And next last one is eccentricity which is c by a. So 5 by 3. Second question, find the coordinate of the foci and vertices, the eccentricity and length of lattice rectum of hyperbolas 49 y square minus 16 x square equal to 784. The standard equation of hyperbola, the right side must be 1. So we divide both sides by 784 each term. So we get y square upon 16 minus x square upon 49 is equal to 1. We see that y is first and x is second. So we compare the equation y square by a square minus x square by b square
is equal to 1. We get a square is 16 while b square is 49, and we get c is root over a square plus b square, and we find the required